सर आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में कुछ जानवर दिखाए जा रहे हैं और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जानवर बहुत बदनसीब है। अच्छा। जो इवोल्यूशन हुआ हाँ। उसके दौरान कुदरत ने उनके साथ खिलवाड़ करा है। हाँ। बंदे ने काफी अच्छी वीडियो बनाई है, थोड़ा मजाक भी इसमें डाला है उसने। अच्छा, तो आप इसे देखें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया। सब ये जानवर के बारे में तो मैंने ये सुना है कि वो लोगों को बर्दाश्त करने की शक्ति शायद मालिक ने नहीं उनको दे देगी, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बर्दाश्त हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, ये सारी हम चीज़ें वो बर्दाश्त करते हैं, इसीलिए तो जानवर है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि क्या वो बदनसीब है, तो उनकी बदनसीबी में कुछ सवाल नहीं उठता है। सर बता रहे हैं कि बदनसीब जानवरों की बात हो रही है। मेरे हिसाब से तो बदनसीब जानवर तो वो होंगे जिनको शिकार करके हलाल करके खाया जाता होगा। बकरा हुआ, मुर्गा हुआ, वगैरह वगैरह जानवर हुए, हाँ, ये हो सकते हैं बदनसीब। तो इसके अलावा क्या है? सर भाई, जब तक आपका भी कहना मैं मानता हूँ अभी अपनी जगह सही हो गया, लेकिन हाँ। अब बदनसीबी की और कोई सी वजह हो सकती है, मतलब वीडियो देखने के बाद सही बोला हो। ठीक से लगाई आप तो। Evolution is name Emily. That's it. That's the whole intro. Don't get me wrong, the concept of evolution is pretty cool. It's the reason giraffes get to flex their high in the entire animal अच्छा kingdom. है ये But there are बात। just times where nature and evolution decide to team up and absolutely hoe an animal's entire existence. So here are 10 animals that I personally think got done the dirtiest. It's not exactly in order, but obviously some animals are going to get violated more flagrantly than others. And I say that because if this list were actually in order, the octopus would probably medal at the मैंने सुना है कि ऑक्टोपस तो बहुत समझदार जजन होता है। हाँ। और ये बंदा को बहुत ऐसा क्या पता हुआ यार। Well, let me explain. Octopus are highly intelligent, and scientists believe they have the same cognitive ability as a 2-year-old human. Which might not seem impressive, but that means octopus are on the same IQ level as some dogs. यार मैं जब समझता कि 2 साल का बच्चा 2 साल में तो वो पहचानने लग जाता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा, ये मेरे भैया, सही। अपन बुलाओ तो वो तो बोला। हाँ। तो वैसे जो वो है उसकी वजह। They're even smart enough to use tools, whether it's using the tentacles of the venomous man of war as a weapon, Oh, which yeah? they actually do, or carrying a coconut around to keep as a travel-sized panic. कमाल है यार। वाह यार, वो जरा को सिवा कुछ करना सीख गए, इससे ज्यादा उनके लोग भैया यार। बाबा मेरे को तो पता ही नहीं था कि इतना दिमाग वाला रहता है। आज पता चला इतना दिमाग धरी यार, ये तो कमाल हो गया था। But being smart is the only thing they have going for them. अच्छा। First of all, most octopus come into the world as orphans. अच्छा। The mother octopus will spend months guarding and washing her nursery of up to 50,000 eggs. अरे पिता अंडे में कितने दिन तक देते हुए अंडे यार, कमाल। हाँ यार, बहुत ज्यादा क्षमता है इसके अंडे देने की। तो हाँ। बाबू ये मत भूलो कि इतने सारे अंडे होने के बावजूद भी वो अनाथ ही पैदा होता है, ये मत भूलो। अब वो क्यों होता है अपन देखते हैं। Since it's too dangerous to leave them alone, and since there's no daycare underwater, she often won't eat the entire time. Which means once the clutch of eggs are finally ready to hatch, the mother is shriveling, starving, and ready to become initials on a Twitter bio. बाप रे बाप। बच्चे अंडों में से बाहर आते हैं, इससे पहले तो माँ मरी जाती है यार। कितनी खतरनाक कुर्बानी देती है यार वो। यार ये बात देखो, मेरे को सुनना भी हुआ कि इतनी बदनसीब माँ है जो अपने बच्चों को शक्ल तक भी नहीं देख सकती। वो पैदा नहीं होता, उससे पैदा मर जाती है यार। बाकी सही बात है यार। Struggle doesn't end there. In fact, that's when it starts. These babies the size of a grain of rice have to figure out life in an ocean full of animals that'll actually try to put an end to it. It's so bad that out of the 50,000 children, if more than 2 survive to adulthood, it's considered overachieving. बाप रे बाप, क्या कर रही है यार। ताज्जुब की बात है यार, खाली 50,000 बच्चों में से खाली दो होशियार हो पाते हैं। कमाल की आज में तो पढ़े मेरे को तो भैया। बाबू मैं तो ये समझता हूँ कि 50 के 50 ये जवान हो जाते हैं तो पूरा समंदर इनसे जगमगा उठता। अब ये भी तो सोचता हूँ कि फिर वो 50,000 में से 2 ही तो बचते हैं। That honestly wouldn't be a big deal if nature didn't already nerf them with their lifespan. It's so ridiculously short that a majority of octopus species that live life to the fullest still won't be alive for their first birthday. Being an octopus means you can be born on New Year's, have a midlife crisis by June, only to be a memory by October. एक साल के अंदर वो निपट जाता है, तो ये भी दुर्भाग्य है कि नहीं यार। बाबू ये ऑक्टोपस का जीवन तो बहुत ही दुखों से भरा हुआ है। हाँ यार, संघर्षपूर्ण जीवन है इसका। बिल्कुल। Giving an animal high intelligence just to cut its life after 1 to 2 years just seems like an intentional dick move. And because they have no shell or no armor, they'd honestly be lucky to live that long. Having no real way to defend themselves means a good number of them end up a sea lion's chew toy or a dolphin's frisbee. बाबू उनके पास ऐसा कुछ बचाव का कुछ उपकरण भी नहीं ऐसा। वैसे कंगने तो दांत रहते हैं। हाँ। वो दांत से काट भी सकती है, इनके पास कुछ है ही नहीं है।
तो वो अपनी जान बचे तो कैसे बचा? बाबू इंसान में तो शिकार करके खा जाता है। To be fair, octopus do have camouflage. In some cases, highly toxic venom. But for the Yeah. most part, they get bodied by most of the ocean. And to add insult to injury, every octopus you see is probably a virgin because once they get laid, they die. एक बार संभोग करना उसको मर जाना यार। बाबू ये तो कुल मिला के बात हो गई कि पहली सौगात में ही चल बसे और बच्चे देखने का तो उनको सुख नसीब ही नहीं हुआ यार। यार उनने सही बोला है कि जो एक्टर जब भी होता है वो कुआरा क्यों होता है, वो उसका कारण कि क्या कि माँ तो अंडे तो देती टाइम मजा आती है और सौगात मरना का मजा। We already saw what happens to the mother, but where did daddy at? Once the male octopus mates, he basically just gives up on life. The male octopus that's catched in his V-card will swim around catatonically until he either gets torn apart by predators or dies of starvation as his body falls apart due to senescence. यार वो जो हमारे गए उसका उद्देश्य यही है कि बस सही से करो और आनंद लो और उसको मर जाओ। क्या कमाल की चीज है। Not like it really matters because most female octopus are bigger than the males and sometimes they'll attack and cannibalize some dirt. हम लोग को खा जाती बोलो यार। अरे यार नरके तो दोनों तरफ मरन है बाबू यार। हाँ सेक्स कर जाता है जब भी मर जाता है और सेक्स ही नहीं करता है तो मजा खा जाती है उसे। But one thing's for sure, if his date doesn't put him out of commission, his post-nut clarity will. Octopus don't live long, but for the months they're alive, their entire existence is a jihad. Now you know why Squidward couldn't give up if a at least with the octopus, it just seems to be really bad luck. They may be a victim of circumstance, but at least you get the idea that nature didn't go out of its way to screw them. Not like with this bird. यार वाकई में ऑक्टोपस जो है बहुत बदनसीब जानवर है। यही जिंदगी अगर इंसानों की होती तो वैसे आज क्या हाल होता। बाबू ये इंसानों के साथ मुमकिन नहीं है। 50,000 अंडे दे रहे हैं, इंसान क्या 50,000 बच्चे पैदा करेगा? Kiwi bird is probably the best proof that evolution ain't perfect. This tiny bird is actually part of the rat-type family. And this cookout includes ostriches, emus, cassowaries, and the rhea. अबे क्या बताइएगा भैया यार कोई तो बोलने मुफल में करे कि सब में तो यार भैया यार। But unlike its bigger cousins, this bird that shares its name with a fruit is about 18 inches tall and no more than 7 pounds. It's kind of like having cousins 6'3", 6'4", and 6'6", yet you came out looking like Tory Lanez. Like your family's tall enough to fit in an NBA locker room, yet you get it from a chair and stay the same height. But of course, nature wasn't done screwing with this bird because like its relatives... अरे ये लो ये तो खिलवाड़ करते आगे और क्या खिलवाड़ करा दिया तूने यार। They can't fly. Totally flightless, and despite being related to ostriches, a Jurassic reject, and a bird that literally won a war against Australia, kiwi's about as defenseless as the fruit that got named after it. Basically, you're looking at a bird that can't bird. The kiwi is such light work that they can only survive on islands without any mammalian predators, because they're really a couple stray cats away from being put in the history books. अब ये बोलो इतना बड़ा कमजोर है कि और कुछ नहीं तो बिल्ली निपटती है। ये तो मुर्गी से भी कमजोर होगा। मुर्गी तो ही नहीं बिल्ली आती है तो उड़ के जान बचा लेती है तो वो भी नहीं कर पाना बेचारे यार। And somehow, that's not it. Because nature shrunk everything about this bird. Everything except the eggs they have to push out of their body. Despite being about 60 times smaller, kiwis have to deal with eggs nearly the same size as an ostrich's. And at 20% of its body weight, that would be like the average woman birthing a 35-pound baby. With the same equipment. बाकी ये बहुत बड़ा वो है, ये मेरे को सबसे बड़ा खिलवाड़ तो मेरे को ये लगा यार। बदन तो देखो वो इतना सा अंडा इतना बड़ा उसके पेट में भरा हुआ था। ताज्जुब की बात है यार। यार उसको यार मेरे को ये लग रहा है अंडा जब देती है तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी यार। It's such a hell to live that the egg actually rearranges the bird's organs and stretches its rib cage. There's too many things wrong with them for me not to think nature had serious beef with this bird. Especially when you realize the kiwi's closest ancestor was the elephant bird, which was about 10 feet, 1,600 pounds. So yeah, they got nerfed bad. यार मेरे सुनकर ये मैं महसूस कर रहा हूँ क्या भगवान ने इसको अगर पैदा क्यों करा इसको यार? At least they didn't get hit as hard as, say, the sloth. For being completely honest here, the sloth has almost nothing going for it. Because they insisted on eating nothing but leaves, their diet makes them one of the slowest animals on the planet. Because they physically can't afford to spend energy they don't have. यार एक बात समझ में नहीं इसके धीरे करने का चलने का कारण पत्ते खाना है तो पत्ते तो बहुत सारे जानवर खाते हैं। समझ में नहीं बात कुछ ना कुछ। हाँ ये बात खाली इसी जानवर कर रहे हो। हाँ इसी जानवर पे क्यों लागू हो रही बात? Because going into debt would mean death. It's to the point where baby sloths have to quite literally hold on for dear life because if it falls to the jungle floor, the mother likely won't waste the energy trying to get it back. And that's because if you're a sloth, leaving this tree is the most dangerous thing you'll ever do. अबे इतना आलसी जानवर का बच्चा नीचे गिर गया और वो उठ भी जाए वो भाई बुरा मत मानना है जानवर पहली बार देखा स्लॉथ। हाँ यार ये
अपने भी नहीं होते हैं। कई बार मैं चिड़िया घर में गया, वो सब देखे, बाकी ये नहीं देखा। Sloths only poop about once a week, and when they do, they'll climb out of the tree and get on the ground to do it. अबे हफ्ता भी वो एक ही बार, बहुत आलसी है रे, बहुत आलसी है भैया यार। Why they don't just drop a deuce from the trees, I couldn't tell you. Nobody knows what goes on in their heads. But this means about half of all sloth deaths involve getting clapped on the toilet like Elvis. बताओ वक्त तकते मर जाते। One thing sloths have going for them is that they're so mind-numbingly slow that algae actually grows on them, giving them free camouflage. There's a catch. There is always a catch. When one of your biggest ops is an eagle with quite literally some of the best eyes in the world, wearing a moss blanket isn't going to amount to too much. इतना स्लो है बाबू भाई कि उसको ऊपर चढ़ते रहते हैं, नहीं काई जम जाती है साले को। और लिखवा के ये नहीं बदनसीब ऐसी लाया है कि बाल उड़ा के ले जाता वहीं से उसको ऊपर चढ़ते रहते। जो चीज दूसरे जानवरों के लिए एडवांटेज है वही उसका काम नहीं कि वो स्लो इतना है। हाँ। And you know evolution was actively working with them because sloths are actually really good swimmers and can hold their breath for 40 minutes, longer than dolphins and seals. But it means almost nothing when most of the time they go swimming is by accident when they fall out of a tree. एक खासियत है बाबू भाई उनकी। क्या? पानी में सांस रोकने की। वो पानी में जाते ही साला वो तो गलती से गिर जाता है। And that weak-ass doggy paddle might save them from drowning, but it won't save them from getting murked by an anaconda or a black caiman. But the really sad part is, sloths could actually be way better than this. Its close relatives, the armadillo and anteater, are able to put the same claws that it has to good use. अबे ये कौन सी जानवर है? मैंने लंबे मुझे मैं तो ये जानवर ही हम पहली बार देखे यार। ये जो उनके रिश्तेदार भी हैं वो क्या? And anteaters have even been known to swing on jaguars. You have a homicidal vacuum cleaner that has put jaguars and people in coffins. And then you have a moss blanket with a face. Just like the kiwi, the sloth used to be better than this. Megatherium, aka the giant ground sloth, was in the same weight class as elephants, and they actually knew how to use those claws. So much so that if Ice Age were realistic, Sid would have worn Diego's ass like a fur coat. ऐसी बात है कि इनके पहले जो पूर्वज थे नहीं बाबू भाई, वो अच्छे थे। अभी ये सारे ढीले हो गए यार। ये तो यार अपन जो ढीले हो गए तो अब अपनी तो ये है कि अब तो कोई गाड़ी आ गई या आ गया जगह चीज आ गई ऐसी आ गया। अब ये लोगों को क्या है जो ये ढीले पे हो गया यार ये। But its massive size ended up screwing it in the end, as they basically got hunted into oblivion by humans, leaving us now with the virtually defenseless, dead-eyed, slower than molasses algae apartment that we call the sloth. You know that thing on TV where it's like someone gets a genie that grants wishes, but only does so in a way that horribly bends them over in the end, and the moral's supposed to be careful what you wish for? That basically sums up this next animal, because it looks like it got finessed by a genie in one of the most disrespectful ways possible. This is a fiddler crab. Male fiddlers have one giant brolic claw whose only purpose is to get a female's attention. Bee crabs choose their mate based on who has the biggest claw and therefore can pass the best genes to her clutch of eggs. The problem is, that is literally the only thing this claw is good for. Because that claw is too big to pick up food, the male... जो चीज इसकी ताकत बन सकती थी वो एक तरीके से दिखाया तो इसकी कमजोरी बन चुकी है यार। ये तो बाकी में इसके साथ में कुदरत का खिलवाड़ी है। एक तो हाथ इतना छोटा और दूसरे वो तो इतना बड़ा, तो क्या कोई खिलवाड़ी तो क्या है यार, और वो भी काम भी नहीं आ रही है। Fiddler crab can only feed himself with that smaller claw. That massive claw is actually a disability that means the males either eat half the food or take twice as long as the females. The only problem with that is that these crabs only eat during low tide, and the longer the crab spends eating, the more likely they are to end up as someone else's main dish. बड़ा पंजा बाबू भाई क्या उसके लिए विकलांगता हो, पर एक तरीके से नहीं इंसान के लिए अच्छा है वो, क्योंकि उसको पकड़ेगा नहीं इंसान तो उसमें बहुत अच्छा निकलेगा। In the evolutionary arms race for female validation, the male fiddler crab is more likely to end up getting eaten by gulls, raccoons, reptiles, and sometimes even bigger crabs. And since the females enable this by being attracted to the bigger but less functional claws, the fiddler is now trapped in a vicious cycle. By preferring males with a trait that quite literally gets them put on a shirt, the females indirectly screw the next generation. Gotta be careful what you wish for, especially if you're this next animal. Because the peacock has the same problem on steroids. यार वो तो अपना राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन वो इस लिस्ट में कैसे आ गई मुझे समझ में नहीं आ रही है यार। वो तो अभी देखता है वो अपन क्या बताना चाह रही है। हाँ वो उसके हिसाब से बताया आपने। We can all agree that the peacock is the biggest flexor in the animal kingdom, and rightfully so. And just like with the crab and basically every other aspect of life, bigger is most certainly better. The more colorful and eye-catching, the better the peacock's chances at bagging a pea head. They'll even shimmy their tail feathers in a way that hypnotizes any female watching. ये चीज जो मोर में इन्होंने बताई ये चीज तो अपने को पता है। ये चीज अपने
इंसानों में भी है, क्योंकि ये अब जैसे ये हुनर है, अभी ये अच्छा जैसे अपने अपने अच्छा कपड़े पहनते हैं और वो अच्छे चल बोला करते हैं और लड़कियां आकर्षित होती, इसी तरह ये भी जो है ना, ये भी अपने उसको बढ़ाने के लिए चलेगा खेल करता है. But like I said, never make a deal with a genie. Because the good news is a peacock showing off will always be the center of attention. Bad news is sometimes that attention comes from a 700-pound assault weapon with stripes. And because those tail feathers are so heavy, not only can't the peacock see behind itself, even if it does see death coming, it takes them longer to get off the ground and out of the tiger's reach. यार ये बात तो बिल्कुल सही है यार, कि ये जो दिखावा कर रहा है, लेकिन इसको ये नहीं मालूम कोई शिकारी जो जानवर वो भी जो इसको देख लिया तो वो तो भी न करेगा भी है वो तो भी. बाबू भाई दिखावे की कीमत बहुत महंगी चुकाना पड़ती है इसको. Just like with the crab, the peacock's biggest flex is often what gets it buried. In a cruel twist from fate, the peacocks that are safer from tigers are usually the ones that get less attention from females. So by having a preference, the peahens doom their future children to a fate of ultimately ending up as a tiger's toothpick. The peacock and Fiddler both got handed massive L's from nature, but at least you can see the thought process behind it. Having huge claws and fancy feathers attracts females, so technically it does serve a purpose. क्या है कि ये बात बिल्कुल सही है, जो केकड़ा और जो मोर है ये दोनों जो जानवर है ये अपने मशहूर के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं. In comparison, the Luna moth got shafted for no reason at all. To make a long story short, adult Luna moths don't have a mouth and therefore can't eat. अब मुनि जैसे भी कैसे यार ये. The only thing keeping them alive is the energy they store as caterpillars. But once that runs out, so does their time. अरे बाप रे, इससे बड़े बचना से तो कोई हो ही नहीं सकती यार. ये यार मेरे हिसाब से जब से वो अपनी जिंदगी में निकल कर बाहर आया तो खाना कैसे खाते हैं क्या करते हैं वो तो कोई जानते ही नहीं होते. Luna moths live for about a week, just long enough to reproduce and doom their children to the same fate of a non-consensual hunger strike. बताओ बाबू भाई यार, एक हफ्ते के अंदर पैदा भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बुढ़े भी होते हैं, मर भी जाते हैं यार. और खाना नहीं खाते बोले. If you ask Google why the Luna moth doesn't have a mouth, it'll tell you because its only purpose is to mate, which is really nature not giving a fraction of about them. मतलब कहने का ये सिर्फ सेक्स के लिए पैदा हुआ है, वो करता और मर जाता. यार ये हम देखने में आ रहा है मेरे कि सेक्स की वजह से बहुत लोग मर रहे हैं. Yeah, that's cruel. Question is, what could possibly be crueler? Well, if you know what this is, you probably have the answer. This is a sea louse. It's a member of the Caligulae family of copepods, which is basically just a bunch of small crustaceans. Now, you probably noticed that for the peacocks and the crabs, it was the guys getting the worst of it. Apparently, nature believes in a weird form of equality because right now it's up for the girls. लो साहब, समंदर की जूं, ये तो पहली बार देखी यार मैंने यार. अब आप कुदरत का बेलन देखो, अभी तक हुनर था, अब वो मजा आ रहा है, वो करेगा देखते हैं. The horror show starts when a male sea louse kidnaps a much smaller female and then forcibly drags her into what I can only describe as a crustacean sex dungeon, where he can have up to 20 other victims also trapped. It's at this moment where this movie loses its rating. यार इसको देख के हमारा एक विलन था जिसका नाम शक्ति कपूर, मुझे उसकी याद आ गई भैया यार. बाबू इन्हें तो क्या गुंडा राज मचा रखा है इन्हें तो एक तरह का आता है. उसको किडनैप कर करके ले जा रहे हैं गुफा में और उनके साथ सेक्स कर रहे हैं, चार तरफ फंसे हुए हैं. भारी आतंक है इसका तो. क्या ऐसा वो जो मेरा भी रामिया ना शक्ति कपूर, वो मैं उनको बहुत बड़ा फैन है. अब बोलते क्या ऐसा फिल्म में एक फिल्म होती है वो कोई चीज होती है, किरदार होता है, नहीं तो वो आदमी बहुत बढ़िया. Because the male will forcibly impregnate every last female in his burrow and is often involved penetrating her abdomen. Don't worry. It gets worse. As her brood of children that she never asked for begin to grow, they decide to start eating their way out. Eventually, the mother's body splits open as her nursery of psychopaths rush out of the now mutilated husk of a corpse. यार ये तो हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये चीज देखा जाए तो यार. एक तो साले ले गया, उनको गर्भवती कर दिया, सेक्स कर करके नहीं, वो बच्चे बाहर आ रहा, पेट फाड़ के वो मर गई. This might be one of the only times where the babies abort the mother. Doesn't even really get to give birth. Her children just bring her death. You might be wondering why evolution would even give this nonsense the green light. Well, the newborn sea louse are entering an ocean full of danger, and having a full meal before they make it out on their own apparently increases their chance of survival. And by cannibalizing their own mother, it's basically a home-cooked meal. यार वाकई में ये तो बहुत बड़ी बदनसीबी है. बच्चे जो भी होते हैं वो माँ के लिए खुशहाल लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ वो ये बच्चे माँ की मौत का कारण बन रहे. ये कितनी बदनसीबी है यार. और तो बाबू माँ के शरीर को खा जाते हैं, बताओ. Somehow, this isn't even the worst birth on this list. That title belongs to the hyena because straight up death is actually better than what they go through. अबे लकड़ बग्गा
यार ये लकड़ बकड़ जो है ना बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने तो सुना है कि बच्चे तक को गाँव में उठा के ले जाता है यार। Female hyenas evolved a pseudopenis that's so similar to the real thing, it's actually difficult to tell males and females apart. This is actually a female. Only problem is it's not just for show. They actually have to give birth to that thing. अच्छा जी। अरे यार बाबू मेरे को इसका लिंक तो बिल्कुल नर्सरी वाकई में कुदरत के खेल बहुत ज्यादा ही निराले आज मालूम पड़ गया मेरे को यार। And yes, it's every bit as painful as you think. And just to somehow make it even worse relative to the mother's size, hyenas have to give birth to the largest cubs of any carnivore, and they have to do it through a penis. Good amount of first-time mothers don't even survive this because the process involves rupturing and splitting open the pseudo to make it easier for the cub. बाप रे बाप, माता तो बेचारी जन्म देने में नहीं पड़ जाती है। But the cubs don't get it easy either. About 60% of hyena cubs will suffocate on the way out and become past tense before technically even enjoying the present. And you would think because this directly affects the mother and the cub that evolution would have patched this. But apparently nature and Lion King have something in common when it comes to doing hyenas dirty. वो दबा दिया शेर ने। बाबू इनमें से जो बच गया जो जवान होगा ही नहीं वो बहुत खुशनसीब है, नहीं तो बाकी तो चारों तरफ तो मौत फैली भी इनके। But if we're talking about an animal that got done dirty, this picture kind of speaks for itself. Matter of fact, this is probably going to be the thumbnail because this is nature at its grimiest. A lot of y'all probably knew this animal is coming just from reading the title, but for those of you that didn't, that was the skull of the Babirusa. It's a wild pig found in Indonesian islands like Sulawesi. If you already knew that, it's probably because of those teeth. यार ये जो मैंने पहले पता ही नहीं था मेरे को। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि नाक के ऊपर से सींग निकले, इसका क्या उद्देश्य मेरे को अभी तक यही नहीं मालूम यार। Those tusks penetrate out of its snout only to do a complete 180 and head right back towards its face. The male Babirusa can't wear down this hellish overbite or he doesn't lose them in a fight, then the teeth will end up growing right back into his head, penetrating the skull and ultimately piercing the brain. बाबू तुमने कहावत तो सुनी होगी यार, अपने पैर पे कुड़ाली मारना। ये तो खुद ही अपने खोपड़ी में दांत मार के मर जाता है होगा यार। The worst part of it all is that by the time it gets clapped by its own dental plan, the Babirusa's probably already had children and therefore passed on its bullshit to its kid. ये बात है मेरे अपने नस्ल तो बड़ा नहीं यार, ये बात तो कहना है। जब तक उसके दांत बड़े होते ही जब तक उससे पहले जन्म देता है औलादें बड़ी रहती हैं। It's a lot like Parkinson's. Okay, hear me out. The problem with Parkinson's is that it usually develops late in life, usually around the age of 60. And patients can have it for years without being diagnosed. So by the time they do find out, it's possible they could have already had kids and grandkids that they could have passed it off to. See the problem, right? The only good thing is that it's somewhat rare for a child to inherit Parkinson's from their parents. The Babirusa, not so lucky. सही बात है क्या वो हुई? क्योंकि माता पिता है अपने बच्चे में कुछ ना कुछ डाल के जाएंगे सी, उनके असर तो आएगी सी उनमें। क्या भैया जैसे उनकी नाक पे दांत है, जाहिर है कि बच्चों की नाक पे दांत होंगे। And as long as females find big tusks attractive, and as long as the tusks only murk them after they've had babies, this pig is going to be screwed eternally, and evolution can't even stop it. But when you talk about being sodomized by the fleshy phallus of nature, you're probably talking about cheetahs. यार मैंने तो अब तक ये सुना है कि कोई जो भी चीज़ जो दुनिया में रहती तो उसको भेजने का कोई ना कोई मकसद तो होगा। अब इसके नाक पे दांत है, ये मेरे अभी तक समझ नहीं कि इसका मकसद क्या है। If you watch Tier Zoo, if you're watching this, you probably do. You've probably heard him say that cheetahs are F-tier garbage that either need to be buffed or just vaulted out of their misery. I love cheetahs, I really do, but out of every animal on this list, evolution might have bodied the cheetah the hardest, and for one simple reason. चीते को तो मैं बाबू बहुत ताकतवर और विशाल समझता था, ये तो कमजोर बता रही है। देखो गाय को दिखते हैं। Cheetahs are really fast. That is all they have. Cheetahs are a textbook example of why you should never dump all your evolution points in one skill, because you'll just get bent over in every other aspect of life. Because they're built for speed and absolutely nothing else, cheetahs often get bullied by other predators, especially lions and hyenas. And because cheetahs have to expend so much energy just to make a kill, it forces them to rest right after, which makes it really easy for other animals to just step in and run their pockets. लो साहब जो उसकी ताकत थी नहीं वही कमजोरी बन बैठी है यार। ये बात तो बिल्कुल सही बोले। इन्हें को वो जितना तेज दौड़ता है वो उसको खाना भी पड़ता होगा, उसको इतना आराम करना होता होगा। But for real, if you're a cat and a bird that literally only eats the dead is able to run you off, you got a lot of problems. Worst part is, cheetahs could easily avoid all of this. Leopards are also lightweight, solitary hunters that occasionally get their food stolen, but they're able to carry their kills up in trees where they can't get harassed by scavengers. But in the evolutionary race for speed, cheetahs evolved non-retractable claws to use as cleats to keep traction while running. Which is why cheetahs can't climb trees, so they gotta get violated on the ground. बाबू तेंदुआ इसलिए कामयाब हो गया, पेड़ पे चढ़ना सीख गया।
Cheetahs are such pushovers that one hyena can successfully rob several cheetahs right in their face and then dare them to do something about it. Cheetahs compromised everything for speed, so now they get to speed run through life. About 70% of cheetah cubs born in the wild will be 6 feet under before their first birthday. अरे बाप रे बाप, ये भी बहुत बड़ी बात है। 70 तो 1 साल के भी नहीं होते ना, उससे पहले मर जाते हैं यार वाकई में। Just to add on to that, because why the hell not? Thanks to genetic bottleneck, a majority of the cheetah population is highly inbred. What you're looking at is a cat that doesn't really know how to cat. Because instead of roaring like lions, tigers, and leopards, the best this spotted doormat can do is chirp like a bird. Matter of fact, if you YouTube it real quick, you'll find they make every sound that isn't a roar. लो साहब, ये देखा जाए तो शेर की नस्ल के नहीं, बिल्ली की नस्ल के हूँ। And that's how you know evolution went out of its way to them. Cheetahs have been around for about 3 million years and decided they were just gonna IM speed their way through life. And because of that, unless it's a 100-meter dash or a bird call contest, this overgrown house cat loses every single time. Obviously, there's a lot of good things about the cheetah, but not nearly enough to justify the abuse they go through. Which is probably why a majority of cheetahs in captivity experience severe anxiety so bad that they start mating and they need an emotional support dog. मतलब कहने का ये है कि चीता खाली बस दौड़ सकता है बस, इसके अलावा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी जो दौड़ वाकई में इतनी तेज है कि इसका कोई जवाब नहीं। और वही दौड़ उसके लिए घातक भी तो साबित हो रही। Which is cute, don't get me wrong, but it's another reason why cheetahs are dangerously close to being the pandas of cats. It's not something anyone wants to be. And don't get it twisted, I don't enjoy roasting cheetahs, I actually really love them, but if nature has favorites, this Cheeto's mascot isn't one of them. And those are 10 animals that got the middle finger from evolution. I'm not gonna lie to you, this video was low-key a pain to make. So if you like the video and you'd like to support this channel, my Patreon's gonna be in the description, but please, don't give money if you can't afford it. Because honestly, I don't need money, I just wanted to cover my crippling Wendy's addiction. Subscribing doesn't cost you anything, so think about it. बहुत अच्छा बताया यार, कमाओ। वाकई में साहब मैं इस बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इतनी बेहतरीन इतनी अच्छी जानकारी इसने जो दी है, इसका कोई जवाब नहीं है कि और इसने वाकई ये और इसने कितनी मेहनत करी होगी, कितने रिसर्च को जब जाके आज ये चीज़ अपने सामने लेके आया और इसने हमें बताया कि इनमें फायदा क्या है, इनमें नुकसान क्या है, और कुदरत इनके साथ में विवाद मैंने क्या नहीं, बाकी में बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि बाकी में बदनसीबी जो है जो उन्होंने दिखाई है वो ये मान कर चला कर झूठ नहीं है। बाबू बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी थी कि जिनको जान के और देख के मैं दंग रह गया हूँ, हक्का बक्का रह गया हूँ। कैसा भी होता है क्या? अभी अगर आपने बहुत से जानवर अपन ने पहली बार देखे हैं, हाँ। मैंने भी पहली बार देखे और आपने भी पहली बार देखे हैं। कभी अपन ने नाम भी नहीं सुना ऑरेंज बिल्कुल सामने। बाबू बहुत सारे मोबाइल से उधर होगा तो मेरे क्या, क्योंकि अपन चीता को कितना पावरफुल समझते हैं, कितनी तेज दौड़ता है, बस खाली इसके अंदर वही खासियत है, उसका अलावा कुछ है ही नहीं। वो ऑक्टोपस को कितना समझदार जानवर समझता है, वो कितना कमजोर निकला वो बेचारा। यार मैंने इस बात में मुझे बहुत अच्छी तरह मैंने ये देखा कि जितने भी हम जानवर जो इसमें मर रहे हैं, या तो वो सेक्स को करने के लिए मर रहे हैं, या बच्चे पैदा करने के इसमें मर रहे हैं, या फिर वो अपनी जो मादा है उनको आकर्षित करने में मर रहे हैं। ये तो तुम ये बोल रहे हो बाबू भाई, वो तो तितली बताइए, वो तो खाना भी नहीं खाती है, सेक्स करती ना मर जाती है। बोलो यार ये कौन सा काम है यार? कुदरत का निज़ाम वाकई में कुदरत से भला कोई नहीं जान सकता है। यानी उसने किस हिसाब में किस जानवर को कैसे बनाया है, क्या अभी तक अपने को कोई जानकारी नहीं मिली थी। इस वीडियो के माध्यम से जो आज जो जानकारी मिली, इसको देख कर वाकई मेरा दिमाग काम भी नहीं कर। कमाल की जानकारी थी यार सर्वे जो आप जो तितली की बात करे थे ना, हाँ। तो भैया मैंने तो दिली इच्छा ये कि अगले हम जन्म में मैं तितली ही बनकर पैदा हूँ। बिल्कुल सीधा सच्चा का काम कि उसमें क्या सेक्स को करो, बड़े 7 दिन का ही टाइम है और 7 दिन में मर जाओ। अभी अपन ये जन्म में आए हैं, काम की टेंशन, बच्चों की टेंशन, नौकरी की टेंशन, कोरोना आ गया, जमाने भर के झंझट, वो कम से कम ये 7 दिन के आप अपना जो फलसफा है उसको पूरा करके 7 दिन में आराम से निपट सकते हैं। यहाँ तो अपन घिस कर मर रहे हैं यार। सबसे दर्दनाक मौत तो समुद्र जूं के लगी यार वो। हाँ यार वाकई में एक बार देखा जाएगा कुदरत की बहुत नाइंसाफी उसके साथ में तो यार, जिस हिसाब से ये जीवन इन्होंने बताया है, दर्दनाक जीवन। हाँ
बाकी सबसे दर्दनाक तो वही वाला है यार, बाकी वो अच्छा वो डिसीजन के बारे में क्या राय है आपकी? नवा बिठाड़े देखे उनके बाबू भाई तुमने? हाँ। बच्चा गिर गया ऊपर से डाल पे से, हाँ। उठाने तक नहीं जाना, शिकारी उठा के ले जाना उन्हें। हाँ वो बोले बोले कौन उठाने जा, अपन तो आराम करो। ये बड़ा अभी इतना बढ़िया यार, अपने बच्चे को अगर कोई लेकर जाए तो अपन को लट लेकर झपट्टा मार ले उसके ऊपर, है नहीं? और उसको तो बच्चे की भी परवाह नहीं, उसको परवाह पता अपनी जान बचिए, लाखों पाए घर का बुद्धू लौट के आए, वो वाला काम हो गया। वाकई में बाबू भाई कुल मिला के बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो थी और बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा नॉलेज मिला। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।